Okay, friends. Next topic in our syllabus is market approach. So basically, market approach. This is the base approach which may be used in income approach also, which may be used in the cost approach also many times when you have to find market rent. The same procedure which is to be followed for calculating the market value of the property, same procedure is to be followed for calculating the market rent of the property. And this market value will be useful in cost approach also. In cost approach there are two components, one is land value and other is building value. For land value we will be using market approach to find the value of the land plot. So as far as syllabus of IBBA is concerned, market value to approach, you have to study types of the market, then market survey and data collection. What are the sources of sale transaction, comparison of sale instances, factors of comparison and weightages for adjustment in value. Then you have to study hedonic model and adjustment grid model under sales comparison method. Then land characteristics and its effect on land value. Hypoth- Hypothetical plotting scheme for value of large land. Residue technique and other development methods. And in the end, you have to study valuation for joint venture development of property. And it has a huge weightage of 7%. Mostly you will be getting theory part out of it, but maybe sometime you will be getting some numerical part also. फ्रेंड्स बहुत Case इंपॉर्टेंट study. सब्जेक्ट है। वेटेज 7% है और 7% के साथ साथ अगर केस स्टडी आता है इसमें 8 या 12 मार्क का तो वेटेज और बढ़ जाता है। और मार्केट अप्रोच एज अ वैल्यूअर आपको आनी ही चाहिए। और इसमें जितने भी मेथड्स हैं, सेल कंपैरिजन मेथड, हेडोनिक अप्रोच मेथड, हेडोनिक मॉडल मेथड, ये आपको आने ही चाहिए। अगर आपको इसमें पूरी कमांड है तो आपको, क्योंकि अगर आप लैंड बिल्डिंग मेथड से अगर आप वैल्यूएशन करते हैं तो आपको मार्केट अप्रोच का डाटा लेना ही पड़ेगा। और अगर आप ओपन लैंड करते हैं तो भी मार्केट अप्रोच आपके लिए जरूरी है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह करना है, ये अभी हम इसको जीरो से सीखना शुरू करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्कोरिंग एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। यस सर। So types of market, as you have already studied in economics part also and the first chapter also, there are three types of market. One is buyer's market, other one is seller's market, third one is balanced market. In buyer's market means buyers have upper hand. In buyer's market, buyers have upper hand. There buyer's market in which there are more properties for sale than the buyers. Means number of sellers are more and number of buyers are less. And buyers have right or power to choose property from a number of properties. And then sellers market, sellers market in which sellers have upper hand. Number of properties for sale are less than the number of buyers. देखिए यहाँ पर उल्टा है। बायर्स मार्केट में बायर्स ज्यादा नहीं होंगे, बायर्स मार्केट में सेलर्स ज्यादा होंगे। सेलर्स मार्केट में सेलर ज्यादा नहीं होंगे, सेलर्स मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल अपोजिट है। आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंफ्यूजन, टेंशन की वजह से आप बिल्कुल मत करिए। बायर्स मार्केट और सेलर्स मार्केट में दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यस सर। So you remember in buyers market, buyers have upper hand, and in sellers market, sellers have upper hand. So number of properties for sale in sellers market is less than the number of buyers. Sellers have authority to choose a buyer. They may get higher returns of their property in buyers market. And then there is a transition period between sellers market and buyers market. It depends upon the economic conditions of a country.
Many times it is seller's market, many times it's buyer's market. Then in between a transition period is there where number of buyers and number of sellers are at par. Maybe very small difference between them. That is balanced market. They are buyers and sellers are on even ground. The number of homes for sale is on par with the level of demand, and neither side have an upper hand. That is balanced market, and it usually occurs between transition period between buyer's market and seller's market. So if you see the difference, in buyer's market, homes take longer to sell. In seller's market, homes sells quickly, and in balanced market, longer than seller's market but shorter than buyer's market. For two marks question, these things are very important. You should learn. So buyers have more listing to choose from. Sellers can be picky with who buys their home, and there is the number of homes for sale is in line with the buyer's demand. In buyer's market, buyers have less competition, and sellers can be picky with who buy their homes. Both buyers and sellers are at the same level in balanced market. So buyers can make lower offers and negotiate more on sale prices and closing costs. And seller can demand higher price in seller's market, and appraisals are on par with offers. In buyer's market, sellers have to do more to market their properties. In sellers market, buyers may have a hard time finding a property, and in buyer's market, both are at the same level. Sellers may need power to lower their prices in buyer's market. In sellers market, sellers can demand higher prices. So neither home buyers nor sellers have much power to negotiate in a balanced market. So many times from these differences, you may get a 2 mark or 1 marks question. Then in syllabus is your market survey and data collection. So how you do have to do market survey and how you will be collecting the data. In market approach, main criteria is collection of the data and then analysis of that data. First thing is from where you can get the data that is reliable. So getting data is not important. Getting real data, reliable data, that is more important. So what are the sources from there you can get data? One, when you do market survey, first you should know what steps you have to follow. First thing is you define your objectives. I mean, what is the objective of your data collection? Determine the purpose of valuation. So objective will be defined from the purpose of valuation. Whether you are doing valuation for buying, whether you are doing valuation for selling, whether you are doing investment or taxation. Accordingly, you have to collect the data. Then once you define your objective, then you identify your target area. To which area you have to target. Focus on specific regions or cities as Mumbai, Delhi, Bengaluru, etc. and a particular area in which you have to carry out the valuation of a particular property. You have to choose the city and then from the city, the area nearer to the property of which you have to do the valuation. So that is identifying your target area, second step. Third thing, then you have to do collection of data. So gather data on recent property sales,
rental rates and market trends in that particular area of the city, town, or village, whatever it is. Then use sources like property registration offices, real estate portals, and market reports. From there, you can calculate, collect this data collect. Then this is the most important thing. Conduct physical inspection of the properties to assess their condition and amenities, of which you have to do the valuation. You have to do physical inspection of that property. Then stakeholder in review. Engage with the real estate agents, developers, and local residents to gather qualitative information. So there are two sources. One is you can go to the registrar's office, real estate portals, and market reports, etc. Second source, most important, is real estate agents, developers, and local residents to gather qualitative information. Then, what are the methods of data collection? First is comparative market analysis. Compare the similar properties that have recently been sold in the same area to estimate the value. First thing is have to compare comparable data should be taken of similar properties in the vicinity of the property of which you have to do the valuation. Second, you can do any method, income approach method. From the rental values, you can calculate the value of the properties that have been sold. And then from the cost approach, which we will be doing after market approach, you can calculate the cost of rebuilding or replacing the property. Then development method. So basically, we will be doing a development method. Development method is generally used for upcoming projects. The project, let us suppose a project of commercial project is going on. Some portion has been constructed and some other portion is under construction. So there we will be using development method. How it will be used, we will be discussing shortly. So key data points you should remember are proximity, location. Location is the most important thing. Means proximity to amenities, public transport, and overall neighborhood quality. These are the things you have to check. Then property size and layout. Larger and well-designed property typically have higher values. The condition you have to check, age of the building, maintenance level of the property. You have to check. Then you have to check market trends, current demand and supply dynamics in the local market. Then what are the other tools and resources which you can use for markets survey and market data collection? Online portals. You can visit website like housing.com, Magic Bricks, and 99 acres for market listing and trends. Then government reports, property registrar office, municipal records, you can check. Then professional services such as real estate valuation firms, real estate agents, etc. So by following these steps and utilizing these methods, you can gather comprehensive data to accurately value the real estate properties in India. So we are concentrating on syllabus part only. There is some change in the syllabus, so we are doing as per syllabus. Next is your syllabus is sources of sale transaction. So what are the sources of sale transaction? First is government registries and local records. You can visit the sub registrar's office. These offices maintains records of all property transactions, including sale deeds, gift deeds,
lease agreements where you can collect the data. Then from the municipal records, they keep the records of property taxes and transfers. And then online real estate portals, you can get the data from there. Then real estate market search firms are there who are doing research on the market data. Firms like JLL India, Knight Frank, and Savills offer detailed market reports and transaction data. You can use their services also, but they are paid services. Then banking and financial institutions. So banking have data on property transaction through mortgage records on loan disbursements. Then real estate investment trust. So many these publish data on their property transactions and valuation, which can be a valuable source of information. Then industry association and real estate bodies. Organizations like National Real Estate Development Council and Confederation of Real Estate Developers Association of India provides market insights and transaction data. Then social media and informal networks, so platforms like Facebook and LinkedIn can sometimes offer insight into the property transaction through community groups and professional networks. These are the sources which you must know as a valuer from where you can get reliable data. Then there are different methods. First method is sales comparison approach. So basically this method is making adjustment to comparable properties. So the goal of adjustment process is to make comparable property look more like the subject property. This is our aim, to make the comparables look like our property. How this will be done, we will be doing shortly. So the price is adjusted to account for valuation differences due to each factors from the previous section. Adjustment can be made at a direct rupee amount or a percentage of overall value. Factors. So what factors you can consider, such as ownership interest, non-realty components of value, and cash equivalency. Other factors such as market conditions, location, economics, and physical characteristics may be more accurately represented as percentage adjustment. So for that, how the what are the factors and what type of weightage you can give to a particular factor? Means let us suppose your property subject property is that property of which you are doing valuation, and sale instance are those for which you have collected the data. Let us suppose the property you are doing valuation is having double frontage, but the property for which your data you have that was single frontage. So you will increase the rate by from 15 to 20%. This is just a thumb rule. Not exactly, it will depend upon condition to condition of in a particular area for a particular case. It will change from case to case and uh, area to area. So generally it is 15 to 20% more double frontage. Double frontage means front and back. So large size plot, our property is of large size, and sale instance property is small size. So per unit rate of larger plots will be lesser than the per unit rate of shorter plot. You remember this criteria. 100 square yard, if we are having 10,000 per square feet, it 500 square feet so square yard plot will have less than that value per unit rate. Over, of course, आपको overall rate will be more, but per unit rate will be less. So here we will be applying a
weightage of -15 to -40%, depending upon the conditions. Then time factors. So we are doing valuation as on date, today. The sale instance was done 12 months, sale 12 months more. 12 months means 1 year or more. It was the property was sold 1 year or ago. So you will be adding 5 to 15% per year depending upon the situation. Then main road. Let us suppose our subject property is situated on main road, then the comparable was on a by lane on a small inside road. So 12, 15 to 30% can weightage can be given. Plot without access. If let us suppose our plot is without access, it will it is a landlocked land. It will only have adjustment value. So -75 to 80%, it will have only 25% market value generally. Then joint ownership. Our properties of which we are doing valuation, it is a joint property between two or three brothers. And the property that was sold, that was single ownership. So we decrease the per unit rate by 5 to 15%. This weightage is on per unit rate, not on the overall value of the property. Then C front plot. सर जॉइंट ओनरशिप की वैल्यू कम होगी क्या सिंगल की? हाँ जी, जॉइंट ज्वाइंट ओनरशिप की वैल्यू कम होगी, तभी तो हम सर वेटेज कम -5 to 15% लगा ठीक माइनस लगा रहे हैं सर आप। ठीक सर जॉइंट ओनरशिप में वैसे कम क्यों होती है वैल्यू? So many times one of the owner is ready to sell the property, other one is not ready to sell, maybe creating some problem. If single owner is, then if he is ready, he will sell the property. Then seafront plot. Our plot it is seafront, and that was away from the sea. So it will have -22 plus 30. See here, if it is very nearer to the sea waves can harm the property. So we will be applying a -20. If it is just away that sea front is making it scenic view, then we will add plus. Then our property of which we are doing valuation, it is having pending litigation, or it is there is some status quo stay of the court against the sale. It was having no litigation, then -30% or more depending upon the condition. Then let us suppose if it is forced sale, we are calculating liquidation value. लेकिन सर अगर कोर्ट का स्टे है तो फिर कैसे सर उसको करेंगे सर? वो तो कोर्ट का स्टे है तो सेल तो हो ही नहीं सकती। हाँ जी, अगर कोर्ट का पेंडिंग लिटिगेशन स्टे ऑफ कोर्ट अगेंस्ट सेल आपने लिखा है तो हाँ। इसमें अगर स्टे अगेंस्ट सेल है तो मतलब फिर इसको कैसे और करेंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं वो कह रहे थे हम ले लेंगे अपने आप खाली करा लेंगे। ये तो लेने वाले ने देखना है सर, अच्छा। बेचने वाला तो चाहेगा कि मैं सील कर दूं। और स्टे हटाने का खर्चा भी कम हो सकता है ना, मान लो 1 लाख वो रुपए होता कभी है 2 लाख नहीं रुपए होता, वो डिफरेंट इशू है। अब ये जिस यहाँ पे इंडिया में यही चीज है सर, आपने कोई चीज खरीदनी है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, इट इज योर ड्यूटी टू मेक ऑल टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज। वहां पे स्टे है नहीं है, वो सेल हो सकती है नहीं हो सकती, वो प्रॉपर्टी ठीक है नहीं है, वो सारी आपकी जिम्मेवारी है। सेल करने वाला तो सेल करके चला जाएगा सर। दूसरा यहाँ पर -30% और मोर, इट कैन बी 100% ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द स्टे। तो क्या आपको वहां पर इंजेक्शन लगी हुई है? इंजेक्शन आपको स्टडी करनी पड़ेगी जो कोर्ट ने लगाई है। अगर इंजेक्शन थोड़ी लाइट है तो -30% है, अदरवाइज इट कैन बी 100% ऑल्सो। Then post sale by the authority, if you are to find liquidation value, the property of which you are having data that was normal market value,
then -15 to -30%, depending upon the condition. So these are just given percentage. Depending upon the condition, these may be higher than or maybe lesser than these percentages. This is just सर हम स्मॉल बोल साइज प्लॉट महंगा नहीं होगा? सर वही कह रहा हूँ कि स्मॉल साइज प्लाट महंगा होगा, उसका पर यूनिट रेट जो है महंगा होगा, तो हमारा प्लाट बड़ा है ठीक है, ठीक है। सर, हम तभी -15 से 40 लगा रहे हैं ना। वो ये डिपेंड करेगा टाइम कंडीशंस पे। टाइम फैक्टर का क्या है? सर टाइम फैक्टर का वही है कि अब आपने टाइम फैक्टर में ये देखना है कि पर ईयर में कितने परसेंट चेंजेस हो रहा है पिछले 5 7 10 साल में, इंक्रीज क्या हो रहा है? कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मे भी कई जगह पे डिक्रीज भी हो रहा होगा, तो हाँ, जनरली इंक्रीज ही होता है, तो उसी हिसाब से आपको जो टाइम सीरीज हम हमने सर पढ़ा था मैंने स्टैटिस्टिक्स। नोट सर मैंने नोट किया पिछले 12 साल के अंदर प्रॉपर्टी सिर्फ 50% इंक्रीज हुई है। जैसे किसी का छह वही हजार है ना, तो नहीं हुआ इसका मतलब 4 से 5% पर ईयर हो रही है, है। यू कैन से अबाउट 4 to 4.5%, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। सर तो इसमें लीज बहुत ज्यादा होल्ड लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है क्या इसमें? हाँ जी, लीज होल्ड लीज प्रॉपर्टी होल्ड इसमें? की प्रॉपर्टी की तो वैल्यू आप सर उसके इनकम अप्रोच से करोगे, उसकी वैल्यू ही आपने वो इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम अप्रोच से ही करोगे। देखिए यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और यही एज अ वैल्यूअर आपको समझना है। मार्केट अप्रोच से आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी या टेरेंटिव प्रॉपर्टी या रेंटेड प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मीन्स नहीं करना चाहिए। यस सर, दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन अमंग आवर कम्युनिटी। कोई भी प्रॉपर्टी है उसको देखना ही नहीं क्या है, मार्केट अप्रोच लगेगा नहीं लगेगा, कॉस्ट अप्रोच हाँ, लगेगा नहीं मार्केट लगेगा। मार्केट अप्रोच वहां पे लगाओगे जहां पर आपने देखना है कि मैं ये प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है कल को यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अगर मैं रेंट पे देता हूँ तो वहां से मुझे इनकम होगी। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी वहां पे सेल हुई है जहां से उसकी रेंट इतना आ रहा था, उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके। अदरवाइज वो वैल्यू उसकी डेटा को यूज करना है सर, आपने उसका डेटा यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो तीनों अप्रोचेस एक दूसरे के डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही लगेगी। कई बार आपको डाटा कलेक्ट करना है तो वो तीनों में से कोई भी लगा के डाटा कलेक्ट करना पड़ सकता है। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन हैव नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज दे आर हाइडिंग। हाँ जी। फिर सर आप उस एरिया में जाओगे, अगर वहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उस एरिया में देखोगे कि बिल्डिंग जो है उसकी वहां से रेंट कितना आ रहा है, कोई बिल्डिंग रेंट पे दी गई है तो कितना रेंट आ रहा है, तो रेंट से आप उल्टी कैलकुलेशन करके इनकम वहां से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो कि बिल्डिंग, उस ओके। बिल्डिंग को कंपेयर करोगे आप वाली बिल्डिंग के साथ, तो ये वाले कुछ लगा के एडजस्टमेंट करोगे। वो कैसे एडजस्टमेंट करनी है अभी सीखते हैं सर, हो जाएगा सर। सर ये क्या, जी सर। सर जैसे सी वाली जो प्रॉपर्टीज रहती हैं जो सी के आसपास हैं, तो जैसे मुंबई हुआ, मुंबई में जो बीच बीच साइड जो मकान बने रहते हैं कई एक्टर्स वगैरह के, तो इनके तो काफी ज्यादा हाई वैल्यू रहती है, पर इधर वही लिखा कह रहा हूँ कि सर 90। उसमें क्या है कि वो बिल्कुल सी के साथ नहीं है, जहाँ पे सी वेव्स का इफेक्ट होता है। सी वेव्स आती है बिल्डिंग के साथ लगेगी तो बिल्डिंग का नुकसान होगा, तो वहां रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू। अगर इतनी दूर है वहां से व्यू दिख रहा है सी का इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर पॉजिटिव होगी सर। देखिए एक टाइडल जोन होता है जहां पर हाई टाइड्स के दौरान सबमर्ज हो जाती है प्रॉपर्टी, या फिर अगर आप किसी दरिया के आसपास हैं या फिर किसी नदी के आसपास हैं, वहां पर भी एक टाइडल जोन होता है। तो अगर सबमर्ज लैंड होती है फॉर द ड्यूरिंग रेन्स और अदर्स, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ वैल्यूअर। आपको उनका पूरा
डेमोग्राफिक सर्वे करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए कितनी टाइड्स रहती हैं और कितना वाटर लेवल ऊपर रहता है और किस हिसाब से रहता है। सारा डाटा स्टैटिस्टिकल डाटा है, यू नीड टू कीप ऑन रिकॉर्ड अगर आप उस एरिया में वैल्यू कर रहे हैं, आप उस एरिया में वैल्यूएशन करने वाले हैं। ठीक है, तो first approach we will be starting first method, sales comparison method. So in this way will have to apply price adjustment. So it will depend upon the time. Most of the time there is not a single correct answer. So basically in market approach you will get a range of values. You will not get a single value. You will get a range of value from 24 lakh to 30 lakh, say 30 lakh to 40 lakh. Then, but in the end, you have to conclude one single value. Then, how to arrive that value? That is another important thing which we will be learn during these examples. So, in sales comparison approach, certain multipliers are used, certain market multipliers are used, which include potential gross income multiplier, effective gross income multiplier, and net in, income multiplier, and capitalization rate. These four things you have to find out in this method. These four factors you have to find. Potential gross income multiplier, effective gross income multiplier, net income multiplier, and capitalization rate. So we will be doing one example, then these things will be clear. Then the second method is hedonic model pricing. It is a technique for estimating the value of real estate. Hedonic pricing model. These factors are considered. First factor is internal factors. Certain factors are considered in this hedonic approach. Property features such as dimension, age, the number of rooms, standard of construction, and gardens, swimming pool, etc. You have to consider these things in hedonic approach. Then external factors, location close to park, school, public transportation, and shopping centers. Then environmental quality, noise level, safety in neighborhood, and the quality of air and water. So basically, in hedonic price model, these are used by multinational companies. They do survey that collect the data, and then from the statistics they find out some coefficients of regression which you have studied in statistics. Why statistics is important? So basically statistics is used in this market approach. Use of market statistics is very important in market approach. So here coefficient of regression is calculated by multinational companies. If the number of rooms, it depends. So they find the coefficient for number of rooms, number of swimming pools, number of gardens, and depending upon this, they can find out the value in a particular area for a particular property. So how it works, how this method works? First, they compile the information on real estate transactions such as features and prices. They collect the data companies, then they carry out regression analysis. Regression means you have to determine impact of each factor on the property prices. Basically, regression is one factor, how one factor affect the other factor. So this was you have studied in statistics. So here in regression analysis is done to determine the impact of each factor on property prices.
using statistical methods. You know, the statistical method you can do it on Excel also. So this entails building a regression model with price of property as the dependent value variable and attributes of the property and outside variables as independent variables. So how the independent variables, property, price as the dependent, this is how the price of the property varies with the variation of these factors, property, attributes of the property and outside variable. So regression analysis is done on to find the effect of attributes of the property and outside variable on the price of the property. So from there we will calculate then coefficient of regression is calculated, and from there value of the property is calculated, estimated basically. जी तेजस्वी सर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ा समझाएंगे क्या? अभी अभी क्योंकि आएगा idea सर, अभी आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर, जैसे आप समझ लो कि आपके मार्क्स आने हैं पेपर में कुछ ही, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ते हो, ठीक है ना, कितने असाइनमेंट्स आप लगाते हो, कितनी आपकी क्लास में अटेंडेंस है। ये तीन फैक्टर आपके मार्क्स जो है उस ऑब्टेन जितने करने वो इस पे डिपेंड करेंगे। ये तीनों वेरिएबल्स हैं, ये ओके सर। तीनों वेरिएबल्स आपके नंबर ऑफ मार्क्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उनका क्या रिलेशन है कि आप एक नंबर ऑफ एक घंटा और ज्यादा पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे, आपकी अटेंडेंस इतने परसेंट बढ़ जाएगी तो उससे आपके मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे। तो वो जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ रूम्स बढ़ जाएंगे तो प्रॉपर्टी का प्राइस कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंट। एरिया ऑफ द प्लॉट बढ़ जाएगा तो प्रॉपर्टी का प्राइस कितना बढ़ेगा। यस। प्रॉपर्टी किसी कमर्शियल एरिया से कितनी दूर है, जितना दूर जाती जाएगी उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, जितनी नियर होगी उससे कितना प्राइस बढ़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, वो एक एनालिसिस किया जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसीलिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया, वहां पे आपने रिग्रेशन, रेगुलर प्लॉट रेगुलर साइजेस नहीं होगा, वो सारा अप्रोचेस कुछ क्या नहीं है ठीक सर, होगा। वही बता रहा हूँ सर कि जो प्रॉपर्टी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हाउ दे आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, दीज थ्री फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हाउ दे आर अफेक्टिंग, that is to be done by regression analysis, and coefficient of regression is find out to find। तो कैसे करते हैं वो आप, दैट इज ए डिटेल्ड प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम जितना हमें आईबीबीआई एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उतना करें, अदरवाइज आप स्टैटिक्स में पढ़ा था आपने कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन से, जैसे शायद भूल गया। यस। So what are the advantages of this method? Detailed insight. This offers a true grasp of factors influencing real estate values, flexibility, adapt various property types and markets we can apply it to. So limitation is collection of accurate and comprehensive data. If this is most important, is that data collected is reliable, more the reliable the data, more comprehensive the data, more accurate the results will be from this method. Then complexity. To create and analyze model, one must possess good background in statistics. That is important, Tejasvi. In today's market, to survive, valuation is, of course, valuation is a part is important, but today's scenario, you have to be an investment advisor.
And if you want to become an investment advisor, good background of statistics is important. So real estate valuation, then policy making, it helps in determining how environmental regulation affect the real estate values. So let us take an example that will make the things clear. So let us suppose we have a data of 10 houses in a neighborhood, including their sale prices and various characteristics. You want to determine how these characteristics influence the sale prices. This is just an example. See, house number one, its price was 5 lakh, size was 2,500 square feet, number of bedrooms was 4, number of bathrooms 3, number of age of the building was 5 years, pool, swimming pool was 1. If it is 1, we will write yes, 0 for no. So garden 1 for, if 1 is written, it means there is garden. If it is 0, no garden. So this data is given to you. You have collected the data from the market. Then you will construct a regression model. We will use multiple linear regression to estimate the relationship between the sale price and the property characteristics. Regression analysis is price beta 0 plus beta 1 into size, beta 2 into bedrooms, beta 3 into bathrooms, beta 4 into age, beta 5 into pool, plus beta 6 into garden. So with the help of statistical tool, any software or Excel, you can you put the data in Excel, it will calculate the regression coefficient for you. You can do it in Excel. So we need not to go. This is just an example. You find out these coefficients. These are important things. These are coefficients. This t value and p value, this is just to check whether your analysis is reliable or not. Basically, you need these coefficients. So by using these coefficients, you can find out value of the property. So intercept your B0 means the best base price of house with all other variables set to 0 is 1 lakh. B0 is price of the property with all other variable put. This is per unit price. Okay, is 1 lakh. B1, each additional square foot adds 150. Each additional, and then each additional bedroom will add 10,000. Each additional bathroom will add 15,000. Each additional year of age will reduce the price by 1,000. Number, each additional pool will increase the value by 30,000. Each garden will increase the value by 10,000. So these can be calculated by coefficient of regression. You can directly cut. So if this value is less than 0.05, it means these values are reliable. ये आपने पढ़ा था statistics में. All the values they are less than 0.05. If these values are less than 0.05, these values are reliable. If these values are more than p values are more than 0.05, these values are not reliable. वहां पर आपने पढ़ा था significant text, वो यहाँ पे यूज होता है. तो आपको ऐसे जरूरत नहीं है, ये एक आपको एग्जांपल है बड़ा बताई गई, क्योंकि आज के डेट में आपको ये चीजें आनी चाहिए. कोई ज्यादा नहीं है, आपने सारा कुछ जो है इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पढ़ा होगा तेजस जी. ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं होगा.
वो भूल गए, दैट इज डिफरेंट इशू। यस एज अ वैल्यूअर आज की डेट में आपको जियोग्राफिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, डेमोग्राफिकल डाटा, ये सारा डाटा अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कलेक्शन। आपके पास जितना बड़ा डाटा पूल होगा उतना ही आप सक्सेसफुल वैल्यूअर बन पाएंगे। अभी सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, अगर आप डाटा कलेक्शन करते हैं और प्रॉपर तरीके से आप रिजॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, देन आपको वैल्यूएशन के बारे में काफी असेसमेंट करने में प्रिसाइज कैलकुलेशन कर पाएंगे। यस सर। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको इसलिए बताइए कि हमारा मकसद सिर्फ आपको आईबीबीए एग्जाम पास कराना नहीं है, आपको मार्केट में स्टैंड करना भी है। ये सारी चीजें किसी भी आरबीओ में नहीं बताई जाएंगी आपको। सर, इतना प्रिसाइजली पता नहीं था सर, एंड दिस क्वेश्चन केम इन आईबीबीए। देखिए, अगर आप मार्केट के हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। ठीक सब है तो हर फील्ड में इकोनॉमिक्स लागू होती है। अगर आप मार्केट में फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवर, अगर आप अपने आप को, एंड दीज आर द बेसिक बेसिक इंसाइट्स ऑफ द वैल्यूएशन प्रोफेशन। अगर आपको ये नहीं आती, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आती है, तो मैंने आपको पहले बोला, थोड़ा सा गलत वर्ड है, लेकिन एक रिक्शे वाला आपसे ज्यादा जानता है। यस सर। ओके, समझ गए, क्लियर है। So यस this सर। is hedonic model. So for example, to take an example for a house of the following सर characteristics: size is सर 2500। स्मॉल इंटरप्शन सर। जी 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 सर। सर वैल्यूज विच आर अबव 0.05 that we have to neglect, or those which are below 0.05 that we have to neglect. अप टू 0.05। सर ये एक टेस्ट होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च जो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारी रिसर्च जो है वो उसको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये पी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वैल्यू जो अगर 0.05 से ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि वहां पर दो होते हैं कि पहला हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस होता है कि जो हमने निकाला है वो ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो क्यों, क्या ठीक है, कैसे करना है, दो हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस रिसर्च में। ये बेसिकली रिसर्च के लिए है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेसिकली। अगर नहीं भी करोगे तो डज नॉट मैटर, एज एन इंजीनियर आपको यहाँ तक ही आना चाहिए। अगर आप कहीं ओके सर। कोई वैल्यूएशन की रिसर्च में जाते हो, कोई मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन करते हो या पीएचडी इन वैल्यूएशन करते हो, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिसर्च में जाते हैं उनको पता है टी टी और पी वैल्यू क्या है। ठीक है ओके ना। सर। ओके ओके सर। तो एक हमने उसमें एक वीडियो डाला है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें सारी डिटेल दी गई है, आप वो रेफर कर सकते हो। ये प्रिसाइजनेस बताता है आपके डाटा कलेक्शन की प्रिसाइजनेस क्या है। अगर ये आपकी वैल्यू कंसिडरेबल नहीं आ रही है, तो आपको डाटा दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा। मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। ये आपकी प्रिसाइजनेस बताता है कि आप कितने सही हैं। आपको ऑफिस में बैठ के अगर आप काम कर रहे हैं और डाटा आप किसी और से कलेक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा एक एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा पिक्चर क्या है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। अदरवाइज दोबारा आप रिपीट करिए उसको, अगर डाटा सही नहीं आ रहा है। यस सर। बेसिकली ये चीज है, जहां तक आपकी फर्स्ट कॉलम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कॉलम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपने किसी, अगर हो सकता है कि अगर आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन्होंने आपको कह दिया कि आप रेगुलेशन एनालिसिस करिए भाई। अब वो पूछेंगे कि ठीक है आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं, अब हमें क्या पता कि ये ठीक है कि गलत है। फिर आप हमको ये बताओगे सर ये भी मैंने किया है सर। तो आज की डेट में बहुत सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होती है, और आप अपना काम भी कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको आती है तो आपके शहर में कोई ऐसा नहीं होगा जो आप कर पाएगा।
तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल उसमें पुट करो एक्सेल में एंड गेट द डाटा। एक्सेल तो चलाना आता ही है। ठीक है, तो एग्जांपल एक लेते हैं कि फॉर ए हाउस विद फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, साइज इज 2500 स्क्वायर फीट, बेडरूम्स 4 हैं, बाथरूम 4 है, 3 है, एज 5 साल है, पूल है, तो गार्डन भी है जस्ट लिखा है, तो वैल्यू पुट की। देखो 1 लाख तो होनी ही होनी है जो हमने किया है, बीटा जीरो। तो जितने एडिशनल हो गए उन्होंने स्टैंडर्ड के लिए निकाली हुई है 1 लाख, एडिशनल बेडरूम्स जो हो गए, और 2500 इंटू 150 जो है वो लग जाएगा, पर स्क्वायर फीट में ऐड हो जाएगा। और 4 बेडरूम है, 10,000 पर बेडरूम की वैल्यू ऐड हो गई। 3 बाथरूम, 5 साल एज है, पर ईयर के लिए 1,000 लेस हो जाएगी। और 30,000 पूल के लिए और 10,000 गार्डन के लिए, तीनों को ऐड किया तो प्राइस आपका आ गया, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द हाउस 5,90,000। देखिए बीटा जीरो का मतलब है वर्ष से वर्ष कंडीशन में आपको इतना वैल्यू तो ये प्रॉपर्टी देगी ही देगी। अगर उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी एमिनिटीज नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, तो मिनिमम से मिनिमम बेस जो प्राइस है दैट इज 1 लाख। ये एज्यूम किया है, इट इज नॉट अ फिक्स फॉर एवरी प्रॉपर्टी। ये आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एज्यूम किया है। अगर आप किसी साइट पर जाते हैं विजिट करने के लिए, वहां पर वर्ष से वर्ष प्रॉपर्टी, खराब से खराब प्रॉपर्टी किस रेट में बेस प्राइस पर मिलेगी, दैट इज बेसिकली आप बीटा जीरो। यस सर। ठीक है ना सर, यही चीज है, इंटरसेप्ट बीटा जीरो लिखा है। The base price of house with all other variables set to zero means everything is zero। ठीक है, तो दिस वाज hedonic grid approach। Second and third method is hypothetical building scheme। इन hypothetical building scheme आप कहाँ पे यूज करते हो कि आपने एक एरिया में गया, जो तो स्टैंडर्ड जो साइज था प्लॉट का वो 200 स्क्वायर यार्ड था। The size standard size of generally plots are of 200 square yard, but you have to do valuation of a plot of say 2000 square yard। So let us suppose per unit rate is 10,000 for this 200 square yard plot. Now you cannot apply the same 10,000 unit price to this large chunk of 200,000 square yard. So what you will do in such case, you will divide this plot into a number of plots by providing roads, by providing parks, other facilities। So this is all hypothetical. It is not to be divided actually on site. Just you will make a plotting on paper। Plotting, can we not take a percentage for roads and for Yes, sir। So you hypothetically plot this on papers, and then you find what is the actual saleable area of the plots by deducting the area reserved for roads, for parks, and other amenities. You calculate net saleable area. You calculate net saleable area, and then you calculate how much cost will be on construction of roads and construction of parks and other amenities. From there, you can calculate the price of per unit। Okay, this is hypothetical plotting basically। Now hypothetical plotting, for hypothetical plotting, now you can do plotting
only if you know bylaws of that area, that so much percent of roads should be there, number of parks should be so much, other amenities should be such, amenities should be available, that you have to take care of. So that thing has to be taken care of, means you should know. First thing Sir, you can have to we जी सर, जी मैडम। सर कैन वी मेक अ मिक्स्ड यूज, जैसे कुछ जैसे मेरे सर साथ वो लग रहा है तो मैडम उसे वो कमर्शियल वहीं में पे कन्वर्ट वहीं कर दिया। वहीं पे आ रहा हूँ, अभी वहीं पे आ रहा हूँ। अभी तो हमने ओके। जस्ट डिस्कस किया कि कैसे करना है, अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन। पहले हम फर्स्ट वी विल एनालाइज द लोकेशन। फर्स्ट वी विल चेक एक्सेसिबिलिटी फॉर फाइंडिंग how accessible the land is. If it has having good roads access, adjacent to the highways, airport, public transport network, increase the value of the land. So first we will check the accessibility of the property. Then we will check the proximity to urban centers, available nearer to the cities, transportation hubs, educational, institutional, commercial zones, depending upon that. Then land use. What are the zoning laws? If zoning law permit you to have mixed use, you can have mixed use. If the zoning laws permit you to have only residential property, then you cannot have mixed use there. देखिए आपको यहाँ पर लोकेशन 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 1 2 3 तीनों एनालिसिस में आपको तीनों तरह की लोकेशन क्लियर हो जाएंगी। व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग द वर्ड लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ये मार्केट अप्रोच में इस्तेमाल होगा। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। So then prospect of development. Okay, first you should check whether subdivision is feasible as per bylaws. Many times in some development areas, subdivision of the plots is not feasible, not allowed. Then topography and soil quality. What type of buildings you may be able to construct there, you have to check. Then you have to check the demand of supply and the demand in the market, whether it will be you will be able to sell that subdivided plots within a short span of 2 to 3 years. And then investor settlement. Land may values may rise as a result of favorable market trends and investors' confidence. Whether the prices are rising or coming down, or whether the economic growth is good in that area. Then facilities and infrastructures. All these things you have to keep it in mind while doing hypothetical plotting. So procedure we have already discussed that first you will segregate the land based upon the predetermined factors like land use, location, development potential. Divide the large land into smaller hypothetical plot. You may be having some residential plot, some commercial plot, some other types of plots, SEO, SAF. You may divide. Then you have to check plot size and configuration. What should be the plot size that you will be able to sell? What should be the size of the commercial plot? Then you have to do market analysis and benchmarking. A through market analysis should be conducted to identify comparable land transactions and benchmark prices for similar plots in the area. Then benchmark prices should be adjusted based upon difference in location, size, zoning, and other pertinent factors. So this we will be doing in the next is same part. Okay, how these values are adjusted. Then take into account factors like frontage, depth, and shape. Then you have to, this is most important, regulatory compliance and development potential. You have to check what are the bylaws prevalent in that particular areas. Accordingly,
that you can do the plotting, that what should be the floor area ratio, what should be the allowable land usage, what are the setback regulation, etc. That you have to keep it in mind. Then next is hypothetical building scheme. So let us suppose you have an bungalow, old bungalow in a commercial zone of the city. Let us suppose you have a old bungalow in Connaught Place, Delhi. So in the vicinity there are commercial buildings and there is an old bungalow. You have to do the valuation. Then you have the only option of hypothetical building scheme. We will assume that we will demolish the existing building and we will construct a new commercial building there. Then from that commercial building, we will do reverse calculation that if there is outright sale, then at what price each unit will be sold, or if it is will be income fetching properties all around, then what rent we will be getting, and then from that net rent we will calculate the value. So that is hypothetical. Basically, it is hypothetically. You need not to actually demolish the building and reconstruct the building. You have to assume that we will reconstruct a building. And for reconstruction of the building, you can check what type of building you may construct, residential, commercial, or industrial, or mixed use, whatever type of building. Then you should know what is the target market, that who can buy or who can take properties on rent in that areas, such as young professionals, families, or companies, etc. What is the target market? Then location. So already location, it is very important that you have to check highest and best use, taking into things like ease of access, local amenities, and room for future expansion. Then site characteristics, you have to check, examine the site's dimension, form, geography, and surrounding characteristics. Then design and style, which is prevalent in that particular area, including elevations, floor plans, and three-dimensional model. Spatial utilization, arrange the effective use of all available spaces, including parking lots, gardens, and common areas. Then estimate cost, that how much it will cost, what will be the cost of building to be constructed, then what will be the cost on design, legal fees, and permit cost, etc. Then your budget for unanticipated costs, this you should estimate. And if the property can be used as an income fetching property, then you have to calculate rental income, that what will be the probable rental income from the property. And if it can be sold outright sale, then what will be the projected revenue from the selling of apartment or spaces. And then other income, other sources such as retail leases, parking fees, or amenities. Then evaluation of finances. So first thing you have to find net present value. Determine the how much future cash flows will be worth today. Then internal rate of return. This we will done in case studies, internal rate of return. So basically internal rate of return is that rate at which net present value is zero. Internal rate of return, that rate. So let us suppose a client comes to you, that he tells you that this is the project I am going, how much I can earn, how much percent I can earn, at least
Then you will find IRR. The procedure is same as net present value. You will find a particular R at which net present value is 0. We will be doing that examples in the case studies. Then payback period, that of how long it will take to recoup your initial investment. That is also very important. Payback period. So then you have to follow, of course, in today's scenario, as all architects, they must be knowing this sector, green building standards, they have to follow use of eco-friendly supplies and methods, and regulatory compliances you have to do. So this is a procedure of hypothetical building and hypothetical plotting, and what are the most important factors you have to keep it in mind while doing valuation based upon hypothetical plotting and hypothetical building scheme. Then you have to valuation of risk, as we have done yesterday, CAPM model. So you have to examine possible reshift in demand and market supply conditions, construction risk, determine the risk associated with delays, overspending, and poor quality. Financial risk related to cash flow and financing. Then techniques of valuation, you may do comparative approach method, income approach, or cost approach, depending upon the type of the building will be constructed. And in the end, how you have to represent your detailed calculation and everything. You can provide a detailed written report. You can do it with the visual aids. In today's scenario, this is very important. And stakeholder presentation, get ready to give presentation to the lenders, investors, and other interested parties. देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ वैल्यूअर है प्रेजेंटेशन, जो आइटम नंबर 10 पर है। बाकी सारी कैलकुलेशन आपको ऑफ द रिकॉर्ड करनी है, ऑफिस के अंदर करनी है, बैक ऑफिस में करनी है। लेकिन जो आप 10 नंबर पॉइंट है, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये आपको क्लाइंट को देना है। तो सबसे ज्यादा आपकी जो रिफ्लेक्शन है, आपकी जो इमेज है, वो इसी से बनने वाली है। आप किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन आपकी क्या है, और आप उसमें कितना डिटेल डाटा देते हैं, सो दैट कि आपकी मार्केटिंग के साथ साथ आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रिसाइजनेस और आपकी जो इंटेंशन है रिपोर्ट में जो आप मेंशन करना चाहते हैं, क्या आपकी फाइनल आउटपुट है, वो आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर complete experience till date. Yes, sir. So next is adjustment grid model. In adjustment grid model, this is next method. So in this method, basically this is the method of calculation. Basically, grid is tabular form of calculation. Basically, that is called grid. So grid creation, different property parameters such as size, location, age, and condition are listed horizontally in a grid or matrix. Then we will list comparable properties. Then we will carry out adjustment are made to the sale prices and comparable to count for differences between them and the subject property. For instance, an adjustment is made to account for comparable properties, bigger lot size. So how this will run, we will do an example that will make the things clear. This method is very important. So basically grid means we will be doing all the calculation in a tabular form. And our aim will be, let us suppose this is our subject property, this is subject comparable 1, comparable 2, comparable 3. So we will brought them at the same level. How this will be done, we will be doing with some example. So then we will be calculating and reconciliation
The adjusted prices of comparable are then used to estimate market value of the subject property, and to determine a single value of the subject property, adjusted value must be reconciled in the last stage. How it will be done? These are the steps which are to be followed. So we will do all these things with examples. As of now, you must understand the steps. Once the first step will be to create grade, then list comparable, then do adjustment, then do calculation, and then reconcile the value. These are the 5 steps in an adjustment grid model. All the valuers sitting here, all the senior valuers might be doing the market approach and using the market approach to finding the value of the land. क्या किसी ने अभी तक ये मेथड इनमें से कोई भी इस्तेमाल किया है अभी तक? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फॉर दिस फ्रॉम द सीनियर वैल्यूअर्स. इनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल करके आपने मार्केट अप्रोच से लैंड की वैल्यू निकाला है? एनीवन? नो. क्यों? डेवलपमेंट. व्हाई? देखिए, यही 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 एक वैल्यूएशन में यही बेसिकली हिडन चीजें हैं जो आपको नहीं पता और आप नहीं करना चाहते, चाहकर भी नहीं करना चाहते. ये आपको करना चाहिए. दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. और अभी जो सिनेरियो आ रहा है, आपसे पूछा जाएगा आपने मार्केट अप्रोच लिया है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है. अभी आप देखिए, मेथोडोलॉजी आपको देनी है. सुनिए सुनिए. अभी जो आप लेटेस्ट सर्कुलर आप देखिए आईबीबीआई का, उसमें लिखा हुआ है कि आपको मेथोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कंपनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने. आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? मार्केट अप्रोच किया है तो मार्केट अप्रोच में कौन सा मेथड किया है, दूसरा क्यों नहीं किया, किया है तो क्यों किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया. मार्केट अप्रोच ही क्यों इस्तेमाल किया, इनकम क्यों नहीं किया, इनकम क्यों किया है, कॉस्ट एंड मार्केट अप्रोच क्यों नहीं किया, बाकी के दोनों क्यों नहीं किए. नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असाइन एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ कि आपने यही मेथड क्यों किया है. जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको. अभी ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा. तो अगर आपने अभी तक नहीं किया, नाउ इट इज राइट टाइम टू मूव इनटू चेंज योरसेल्फ एंड मूव इनटू दिस न्यू सिनेरियो. यस सर, प्लीज कंटिन्यू. So next technique is residue technique and other development method in your syllabus. In land, while valuing real estate, residual methodology and other development methodologies are crucial. So first is land residual method. So in this method is used to estimate the value of land. So basically, basic is that building part is land plus building. Total value of a building is cost of land plus cost of building. This is total value. And if you have to calculate land value, what you will do? Land value will be equals to total value minus building value. Clear? This is the basic of this method. If total value of the property is known to you, value of the building is known to you, you can calculate the value of cost of land. So this is important. Let us suppose you have gone to an area where there is a single plot and all other plots have been converted into building, and no data about the value of the land is available, per unit land is available. Then you will collect the data about the buildings sold recently. From the sale price, you will deduct the depreciated cost of the building. You will calculate the cost of the land, and then you can convert it into per unit cost. This is the basic funda. So see here, land value is equals to total development value minus development cost plus profit. For example, if the overall sale value of the property which you find in that area was say 1 crore and the development cost plus profit was 60 lakh, it means value of the land will be 40 lakh. Similarly, if you have to find the value of the building, it will be equals to total value minus land value. This is building residual technique. In this
This method calculates the net return attributes to the land and subtracts it from the total return of the property in order to assess the building's value. So, for example, a property, let us suppose a property generates 10 lakh in annual return income and land generates 4 lakh and the remaining 6 lakh is attributed to the building. It means if capitalization is 10%, so the building value will be 60 lakh. Clear? So this is building residual technique. Then the next method is building a development method. So this is basically used for undergoing large projects. So still project is in the initial stage, but after construction the value will be much higher, and based upon that you have to do the valuation as on today's date. So residual, this by calculating cross development value and subtracting the all development expenses including profit margin. This method is used to price the land property with development potential. This is residual land value, gross development value minus construction cost plus professional fees, financial cost and developers process. Let us suppose gross development value of the project is 10 lakh, 10 crore. Out of this, construction cost is 3 crore. Professional fees is 20 lakh. Finance cost is 1 crore 50 lakh. Developers profit is 2 crore 20 lakh. Sorry. So the residual land value is 3 crore 30 lakh. तो अगर आप जाते हो कि एक प्रोजेक्ट है उस पे आज की डेट में तो यहाँ लैंड ही है, लेकिन इस पे प्रोजेक्ट बनना है, प्रोजेक्ट पे जो है प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी वैल्यू इतनी हो जानी 10 करोड़ वो हो जानी है, उसमें से ये खर्चे आएंगे, तो ये बिल्डिंग की लैंड की वैल्यू क्या है? दिस इज डेवलपमेंट मेथड। क्लियर? एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपके सिलेबस में है ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि दो पर्सन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वन पर्सन इज he gives his land and second person is who will be called landlord and the second person is investor. So both of them will invest something. Landlord will invest in the form of land and investor will do the construction part and other costs. They will be beared by the investor. So in this case, you have to determine, first thing you have to determine contributions. How much each have contributed. So each partner in the joint venture typically contributes different assets or resources such as land and property. One partner may provide existing property or land. Other partner may provide capital required for development may come from a different partner. And another thing is that some partner may provide his project management, construction services, development skill, or further possible contributions. You have to check who are the partners in this joint venture and what is the contribution of that particular partner. So first thing you have to find contribution of each partner of joint venture. And then का concept सबको समझ लगा है क्या होता है? Anyone who is unable to understand the concept of joint venture, what is mean by a joint venture for a valuer? Anyone? ज्वाइंट वेंचर में दो लोग होते हैं, एक जो इन्वेस्ट करता है और एक लैंड ओनर होता है। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा हूँ, किसी को समझ नहीं लगा? अच्छा। Anyone who is unable to understand? तो इसमें दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं जी। this may be three here, madam. We have already seen.
It may be more than two. Yes. Landowner, capital provided, and then skill provider. देखिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ. लेट इट बी, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे ग्रैंडफादर ने खरीदी थी. लेट इट बी, इट इज ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड. इट इज सिचुएटेड इन एरिया विच वाज अंडर डेवलप्ड एट दैट टाइम, बट नाउ इट इज डेवलप्ड एंड इट इज ऑन द मेन रोड. अभी उसके बाद में मेरे जो ग्रैंडफादर ने खरीदी थी, नेक्स्ट पेरेंट्स आए. पेरेंट्स में दो तीन ब्रदर्स थे, वो भी साथ में रह रहे हैं. उनके बाद में उनके नेक्स्ट जनरेशन आ गई. हम सभी एक उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रह रहे हैं. अब वो प्रॉपर्टी उस वक्त के लिए सफिशिएंट थी, लेकिन अभी क्या है, डेवलपमेंट ज्यादा हो गए, मीन्स नंबर ऑफ पर्संस बढ़ गए हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर वो पुरानी स्टाइल में है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, और उसको यूज करने के लिए हमें काफी मुश्किल आ रही है. तो अभी लेकिन आई एम फाइनेंशियली नॉट अ स्ट्रांग पर्सन, या मेरी फैमिली भी ऐसी स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको तोड़कर दोबारा बना सकें. तो लेट इट बी मिस्टर ललित काले. ललित काले साहब आते हैं, वो बोलते हैं सर आपकी प्रॉपर्टी है, मैं एक बिल्डर हूं, मैं यहाँ पर एक आपको एक बढ़िया प्रॉपर्टी बनाकर दे दूंगा, आप मुझे लैंड दे दीजिए फॉर द टाइमिंग, थोड़े टाइम के लिए आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए. मैं लेट इट बी यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगा, उसमें 20-25 अपार्टमेंट बनाऊंगा. आपके लेट इट बी 5 या 7 लोग हैं, आपको 5-7 लोगों को मैं एक अपार्टमेंट दे दूंगा, और बाकी का मैं सेल कर लूंगा. तो ललित जी इस मामले में आते हैं. तो उसके बाद मेरे पास आते हैं मिस्टर प्रतीक गुप्ता. प्रतीक गुप्ता बोलते हैं मैं आपको इसमें सारा फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो मैं सारी दूंगा, बिल्डिंग के लिए जो लेबर वगैरह है उसके असिस्टेंस दे दूंगा, या कुछ और फैसिलिटीज दे दूंगा, या इक्विपमेंट्स मेरे पास है, मैं वो आपको जेसीबी वगैरह या वॉट एवर इट इज वो दे दूंगा. तो हम तीनों लोगों ने पार्टनरशिप कर लेते हैं. मैं अपनी प्रॉपर्टी का लैंड मैं उनको दे देता हूँ, मिस्टर ललित काले उसको डेवलप करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और मिस्टर प्रतीक गुप्ता उसमें जो इनपुट्स होंगी, टेक्निकल इनपुट्स होंगी, या मैनेजमेंट होगी, या फिर इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी देना चाहेंगे वो देंगे. तो तीनों के बीच में मैंने तो अपना कुछ नहीं लगाया, मेरा तो सिर्फ लैंड है. फाइनेंशियली ललित काले जी लगाना चाहते हैं, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रतीक गुप्ता जी देना चाहते हैं. तो तीनों के बीच में क्या पार्टनरशिप होगी, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर. इन शॉर्ट आप उसको आगे डेवलप कर सकते हैं. यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर, सॉरी. Okay. So first you will determine the contribution of each partner, and then you will determine equitable value of each partner. So fair market value must be assigned to each contribution. This can be difficult, particularly when it gets to in kinds of gifts like knowledge or exclusive technology. Typical techniques consist of you may use comparable sale method, you may use a cost approach method, or you may use income approach method. So how it will be done, we will be doing this in case studies. So method of valuation. So to determine joint ventures overall, several methods are applied. First method is discount cash flow method, as you know. So whether the project is viable or not, we will calculate a net present value. We may use comparable transactions method. We may use cost approach method. Then next thing you have to do is profit sharing and ownership. That establish the ownership percentage and profit sharing plans based upon the contribution of valuation. This guarantees input value of each partner is reflected in their shares. Then evaluation of risk. This is most important. Many times this thing we are not, none of us might have done this. Evaluation of risk part. सभी ने कोई हो सकता है कोई कोई ना कोई मेथड जिनमें से किया हो, लेकिन ये वाला पार्ट किसी ने नहीं किया. Evaluation of risk, that CAPM model, calculation of beta, etc. सर इन Then जॉइंट वेंचर कुछ परसेंटेज है सर, ओनर और हाँ द सर, वो सारा कुछ आएगा. अभी तो सिर्फ बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है इनका, इनकी जो देखिए कोई भी आदमी इन्वेस्ट करेगा वो फ्री में तो नहीं करेगा. ना ललित काले जी करेंगे, ना ही प्रतीक गुप्ता जी करेंगे, ना ही मैं करूंगा. मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा. वो वही परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ही जॉइंट वेंचर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एज अ वैल्यू. दैट वी विल सी इन द एग्जांपल्स. यस सर, प्लीज कंटिन्यू. ओके सर. so then you have to check the tax and legal aspects also. So whether the joint venture is feasible and what are the legalities may involve in it. Make sure all legal and tax requirements are met. This entails being aware of the effects of real estate taxes, capital gain taxes, and other pertinent taxes. Then, in the end, you must know exit strategy and governance. If some
or one or the two partner wants to leave the joint venture, then what will be the strategy? And who will take care? Who will govern the project? So clearly define your exit strategy and governance frameworks. This covers the procedures for making decisions, methods of resolving conflicts, and the terms under which partners can terminate the joint venture. So as a valuer or as an investment advisor, someone may come to you. Maybe as Sandeep ji has told that he was having a property and two-person has approached him, but all the three persons might not having technical know-how how to proceed in joint venture. Then as a valuer, as an investment advisor, what you have to do, all these things have to be done by you. अभी ये तीनों लोग संदीप बंसल, ललित काले और प्रतीक गुप्ता जी एक थर्ड पर्सन के पास जाएंगे. लेट इट बी मिस्टर सलेश. सलेश के पास जाएंगे. सर आप वैल्यूअर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप हमें बताइए हमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और हर एक को कितना कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कितना कितना वो कमा सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के बेस पे. या मिस्टर अरविंद बंसल के पास जाएंगे, एक ऑल्टरनेट ओपिनियन हम ले लेंगे. तो आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे, हम कैसा इन्वेस्टमेंट करें और हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना कितना होना चाहिए? दैट अ वैल्यूअर हैज टू do calculation and satisfy them and so that they can continue with the project. Yes, So sir. this is the theoretical portion as far as market approach is concerned. So sir, Sanjeev ji, we will have a lunch break of 1 hour. After that, we will start the examples or case studies based upon market approach. Okay, right, sir. So friends, it is a time for lunch break. It is 1 p.m. now. We will take our lunch break for 1 hour and the attendance will be sharp at 2 p.m. Then we will continue with the case studies related to the theory subjects we have learned till now. Till then, you can leave the meeting and join 5 minutes before starting the class. 2 means 2. 2:0 पर अटेंडेंस होगी. अगर आप नहीं है तो अटेंडेंस आपको पूरे दिन की काट दी जाएगी. ऑब्जर्व एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स. यस, एनी डाउट? सर सेलर बायर और बैलेंस मार्केट का एक एग्जांपल मिल जाता तो सर. सभी देंगे सर, सभी एग्जांपल्स आने वाले हैं अभी. केस स्टडी में सभी एग्जांपल्स आएंगे. वी विल डू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस. एक क्वेश्चन है सर. एक क्वेश्चन है, वो आरएनडी के बारे में थोड़ा डिटेल रहे तो अच्छा रहे. आएगा सर, सभी अभी क्वेश्चंस आएंगे सर. अभी 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 आपने सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ा है. अभी सारे क्वेश्चंस अभी आफ्टर लंच ब्रेक आएंगे.